Hello, this is Mohammad Yasir Arafat, and today we are going to discuss O-Level Physics 5054. Here we will be discussing our first topic of chapter number 1, and the first chapter is physical quantities, units, and measurements. So, first topic of this chapter is scalars and vectors. First, we must know what are the scalar quantities and vector quantities. And before that, we must have some knowledge about physical quantities. Physical quantities are those quantities which can be specified by using magnitude, unit, and directions. We cannot use directions every time. हम हमेशा directions use नहीं करते to specify a physical quantity. So अगर हम define करने जाएं, we must know कि anything that can be measured are called physical quantities. और उन फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट को शो करने के लिए वी मस्ट शो द मैग्नीट्यूड यूनिट एंड समटाइम्स डायरेक्शंस फॉर एग्जांपल 5 kg ऑफ शुगर कि हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं और आस्किंग दैम कि हमें बैग ऑफ 5 kg शुगर हमें प्रोवाइड करें. Here the 5 is the magnitude and kg is the unit. सिमिलर वे में अगर हम किसी को एड्रेस गाइड कर रहे हैं या तो फिर किसी भी बोर्ड पर अगर एड्रेस मेंशन्ड है सो वहाँ पे मेंशन ये है कि 15 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, जिसमें 15 इज रिप्रेजेंटिंग अस द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी एंड किलोमीटर इज रिप्रेजेंटिंग अस द यूनिट फॉर द फिजिकल क्वांटिटी. टूवर्ड्स ईस्ट, इस केस में टूवर्ड्स ईस्ट मीन्स के ये बता रहे डायरेक्शन, यानी किस डायरेक्शन में जो भी पर्सन है उसको मूव कर. नाउ वी मस्ट नो व्हाट आर द स्केलर क्वांटिटीज. Scalar quantities can be specified by using magnitude and unit only. With the help of these two entities, we would be able to define a scalar and scalar quantities. For example, as we had used earlier, इसमें हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल था दैट इज 5 kg ऑफ शुगर. अब यहाँ पर 5 kg ऑफ शुगर में मैग्नीट्यूड और यूनिट तो प्रेजेंट है, जिसमें मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को और यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है kg को. रिमेंबर वन थिंग, मैग्नीट्यूड यूजुअली किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है एंड यूनिट रिप्रेजेंट करता है कि विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वी आर मेजरिंग. सो स्केलर्स में अगर हम क्लासिफाई करने जाते हैं तो वी कैन सी दैट सम मोर एग्जाम्पल, जिसमें मास, डिस्टेंस, टाइम, एनर्जी एंड प्रेशर, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है जो कि स्केलर्स का पार्ट बन सकता है. बट वी हैड यूज ओनली 5 इन दिस वीडियो. इसी तरह से वेक्टर क्वांटिटीज की तरफ अगर जाते हैं तो फिर वी मस्ट नो दैट वेक्टर्स कैन बी specified or defined by using magnitude, unit, and directions. So with the help of these three entities, we would be able to define a vector quantity. For example, अगर हम देखते हैं तो previously we had used के 15 kilometer towards east while we were guiding a person to their destination. So इसमें 15 किलोमीटर में 15 is the magnitude and kilometer is the unit towards east representing as the directions. जिसमें एग्जाम्पल फर्स्ट बनता है velocity, displacement, acceleration, torque and momentum. Remember one thing, as I had said earlier that कि इसमें number of physical quantities यहाँ पे include हो सकते हैं, but we had used only 5 vector quantities. So अगर हम एग्जाम्पल को देखते हैं फॉर द स्केलर्स एंड वेक्टर्स, जिसमें हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट नजर आ रहा है. अगर हम डायमेंशन वाइज देखते हैं तो फिर इन सब का डायमेंशन लेंथ बनता है, बट हमने डिस्टेंस को प्लेस किया स्केलर्स में और डिस्प्लेसमेंट को प्लेस किया है वेक्टर्स में. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट?
फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने गाइड किया किसी तुम्हें कि यू नीड टू वॉक 15 किलोमीटर टू रीच योर डेस्टिनेशन, जबकि तुम्हें नहीं मालूम कि किस डायरेक्शन में ट्रैवल करना है टू रीच द डेस्टिनेशन. सो हियर मैंने डायरेक्शन मेंशन नहीं किया, सो दैट मीन्स यू हैव टू ट्रैवल 15 किलोमीटर. फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टेइंग एट दिस पोजिशन, बट डेस्टिनेशन का तुम्हें नहीं मालूम. सो तुम किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकते हो, या तो राइट साइड में, या तो अपवर्ड, या तो लेफ्टवर्ड, या तो किसी भी और डायरेक्शन. सो किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल करते हो तो फिर इट वुड बी यू वुड बी कवरिंग 15 किलोमीटर डिस्टेंस, बट इट विल नॉट definitely reach you to the destination if no direction is given. इसी तरह से अगर हम डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं, सो वी कैन से दैट जिसमें हमारे मैंशनड है वॉक 15 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, जिसमें हमारे पास एरो मेंशन है टूवर्ड्स ईस्ट के डायरेक्शन. सो दैट इज व्हाई वी हैड क्लासिफाइड वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटीज इन डिफरेंट वे. अब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ मेथड्स को फॉलो करना है, जस्ट लाइक दिस बॉय इज मूविंग टूवर्ड्स हिज हाउस. अब ये जो बॉडी के पोजीशन में जो चेंज आया है, इसको हमने रिप्रेजेंट करना बाय यूजिंग एन एरो, where the magnitude of arrow will be determined by calculating or by measuring the length of the arrow, और जो direction है that will be determined by the head of the arrow. This head will define as the direction of a physical quantity. So ये direction बहुत ज़्यादा vital role play करेगा. Now we need to add two or more than two vectors by using head to tail rule method. Remember one thing, head to tail rule method से अगर हमें किसी vectors को add करना है, उसके लिए concept जो है उसको understand कर. Remember one thing that कि vectors जब add करेंगे हम by using head to tail rule method, इनके direction won't be change, इनके direction कभी भी change नहीं होंगे, but you can change their order. इनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हो कि पहले ए ड्रॉ कर लो, फिर बी ड्रॉ कर लो, देन सी ड्रॉ कर लो. यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द वेक्टर, बट यू कैन नॉट चेंज देयर डायरेक्शंस. जस्ट लाइक दिस बॉय इज मूविंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन. अब यहाँ पे जो ट्रैवल किया है इसको हमने मार्क किया विद द ब्लू एरो, दैट इज रिप्रेजेंटिंग अस के boy is moving from that point to this point, and he is moving towards down. इसको भी हमने नेम मार्क किया विद एन एरो, जिसमें अब जो सेकंड एरो जो हमने मार्क किया है वो फ्रॉम द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर मार्क किया है. सो बाय दैट केस रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड डिटरमाइन करने का हम वेक्टर्स को नेम करेंगे, जैसे ब्लू एरो को नेम किया ए से एंड ग्रीन एरो को नेम किया बी से. And then we had drawn a vector from the head of the second vector to the tail of the first vector. So यहाँ पे हमें मिल जाता है resultant vector. Resultant vector will be giving us the total value or total displacement of the body. Now head to tail rule method addition जो है parallelogram method के जरिए भी follow किया जा सकता है. As we had discussed earlier कि यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे ट्रायंगुलर मेथड इसको हम कह सकते हैं, नेम कर सकते हैं. Now we will be following a parallelogram method. What is the speciality of doing parallelogram method? Parallelogram method में हमेशा वेक्टर्स को ड्रॉ करने के लिए जो इनिशियली जो प्लेस किया जाता है वो ऑरिजिन ऑफ द वेक्टर्स हमेशा सेम पोजीशन से मिलेगा. फॉर एग्जांपल ये एक पोजीशन है, यहाँ पे इसी पोजीशन से दो वेक्टर्स हमने ऑरिजिन किया. नाउ अब करेंगे क्या, टू फॉलो द हेड टू टेल मेथड टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. इसके लिए ज़रूरी है कि वी नीड टू ड्रॉ पैरेलल वेक्टर्स. हमने पैरेलल वेक्टर ड्रॉ किया ग्रीन वेक्टर के डॉटेड लाइंस में, और
एक और पैरेलल वेक्टर ड्रॉ किया है ब्लू लाइन में, जो कि डॉटेड लाइन्स अगेन. Now, the diagonal of this parallelogram will give us a resultant vector. So, in इस resultant vector के जरिए हमें find out हो सकेगा कि resultant vector की magnitude क्या है, अगर हम length find out कर लेते हैं. Thank you for watching me, and inshallah in the next video we will be doing our past papers.